आवाज कशाची हुई है? बंद करते पड़ते करो फैन बंद कर. Good afternoon, friends. Good afternoon, sir. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. So today we will start the new book, that is Book of Productive Homeopathy, Part 3. The End of My Assumptions of Miasm. So the book is on miasm. So theory of miasm. तो गुड आफ्टरनून. तो किस किस के पास ये बुक है या फिर नहीं है? गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. तो अगर किसी के पास बुक नहीं होगा तो फट से गूगल से डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ लिविंग बीइंग डाउनलोड कर लीजिए. डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ लिविंग बीइंग. तो ये जो बुक है इसका कवर पेज देखिए. इस कवर पेज का मीनिंग, इस बुक पे सर ने 3 कलर्स दिए हैं. ग्रीन दिया है, दिस इज ग्रीन, दिस इज येलो एंड दिस इज रेड. सो जो ग्रीन कलर है ये बहुत ही छोटा पार्ट यहाँ पे सर ने दिया है, येलो बहुत बड़ा दिया है और रेड एक छोटा पार्ट दिया है. सो इट इंडिकेट्स दैट सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस. तो सोरा बहुत शॉर्ट सर ने अकॉर्डिंग टू दिस एरा, तो अभी के हिसाब से सोरा जो है बहुत शॉर्ट होता है, साइकोसिस बहुत बिग है एंड सिफिलिस एट द एंड. सो यहाँ पे सर ने लाइफ बताया है. लाइफ स्टार्ट फ्रॉम इन्फंट, दैट इज द बर्थ. सो उसके बाद टॉडलर, देन एडल्ट, देन ओल्ड एज.
सो 16 में जो एज बताया है दैट इज द इन्फेंट चाइल्ड, देन टॉडलर, टॉडलर से साइकोसिस स्टार्ट होता है अप टू एडल्टहुड, एंड उसके बाद ओल्ड एज दैट इज सिफिलिस। तो ओल्ड एज इज सिफिलिस में बताया, कलर में बताया, ग्रीन में इन्फेंट टॉडलर बताया, देन साइकोसिस में आप देखो यंग एज साइकोसिस में बताया। सो दिस इज माइजम अकॉर्डिंग टू एज। देन यहाँ पे आप देखिए सर ने वॉच बताई है, वॉच में आप देखो जो हैंड्स है वॉच के उसमें सोरा साइकोसिस एंड सिफिलिस बताया। तो सोरिक एज यहाँ बताया 0 to 20, 20 to 40, 45, 50 it is psychotic age, and up to 80 it is syphilitic age. So सर ने according to watch the lifespan यहाँ बताया है, according to lifespan the age group यहाँ बताया है according to miasm, and the life begins, life start from the single cell, इसलिए सर ने सेल का भी पिक्चर यहाँ दिया है। उसके बाद जीन्स बताया है, तो सेल कंटेन्स जीन्स। सो इस टाइप से सर ने इस बुक का डिजाइन किया है। नीचे लिखा है मैथमेटिक्स ऑफ ह्यूमन डिफेंस अगेंस्ट डिजीजेस। यस, तो होम्योपैथी इज आल्सो मैथमेटिक्स। लेकिन जो नेम है बुक का, द एंड ऑफ मायसम्पशंस ऑफ मायसम, ये बहुत ही मीनिंग रखता है, क्योंकि सर ने लिखा है द एंड ऑफ, म्हणजे इसके आगे मायसम का कुछ भी नहीं बचता। सो दिस इज द एंड ऑफ मायसम। यस, तो मायसम का फुल इंफॉर्मेशन इस बुक में आया है। तो मायसम किस टाइप से होते हैं, मायसम किस टाइप से देखना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, मायसम कैसे होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके पैथोलॉजी, सब कुछ सर ने इस बुक में दिया है। यस, सो इसीलिए कहा है कि दिस इज द एंड ऑफ मायसम। तो जैसे हम ये बुक खोलते हैं, क्योंकि देखो कोई भी बुक पढ़ने का है ना, तो वो बुक आधा हम वहीं पढ़ लेते हैं अगर उसका हम कवर पेज देखते हैं। कवर पेज के बाद उसके अंदर जो भी स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि प्रीफेस होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है, अगर हम पढ़ लेते हैं तो आधा बुक पढ़े जैसा हो जाता है। तो आपको एक आइडिया इस बुक के बारे में आ जाती है। जैसे हम प्रीफेस पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तो हमेशा स्टार्टिंग प्रीफेस इंट्रोडक्शन से ही करनी चाहिए। तो जो सर ने कवर पेज दिया है, कवर पेज के बैक में सर ने डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ लिविंग बीइंग दिया है। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ लिविंग बीइंग, तो डिफेंस कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट डिफेंस, सेकंड डिफेंस एंड थर्ड डिफेंस। फर्स्ट डिफेंस बाय इन्फ्लामेशन, तो कोई भी डिजीज अगर बॉडी में स्टार्ट होता है तो उसकी स्टार्टिंग इन्फ्लामेशन से होती है, दैट इज द फर्स्ट डिफेंस ऑफ बॉडी। Then second defense is structural change, that is psychosis, growth. So inflammation, it is sora. Psychosis, that means growth, accumulation. This is the second defense. And third defense is destruction. So first defense, inflammation, second defense, growth, and third defense is destruction. तो देखिए सर ने यहाँ पे भी कलर दिया है। फर्स्ट इंफ्लामेशन दैट इज ग्रीन, सेकंड साइकोसिस दैट इज ऑरेंज और येलो, एंड थर्ड डिफेंस दैट इज सिफिलिस इज रेड। देन सर ने इंफ्लामेशन में दिया है अगेन टू टाइप्स, फिजिकल डिफेंस एंड मेंटल डिफेंस। तो फिजिकल डिफेंस में हम बॉडी में देखते हैं इन्फ्लामेशन किस टाइप से होता है, कैसे होता है, क्या साइंस होते हैं, कैसे सिम्टम्स होते हैं। हर ऑर्गन में, टिश्यूज में, सेल्स में इन्फ्लामेशन होता है। तो फिजिकल डिफेंस में सर ने दिया है इन्फ्लामेशन, इरिटेशन एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी। दिस इज द फर्स्ट डिफेंस, फिजिकल डिफेंस। एंड
फर्स्ट डिफेंस में अगेन मेंटल डिफेंस में सर ने दिया है एंजाइटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे एक्चुअली सर ने इंफ्लामेटरी कंडीशन में बॉडी किस तरह से बिहेव करेगी, एक्ट करेगी, और माइंड किस तरह से बिहेव करेगा, एक्ट करेगा, क्या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स उसके होंगे, सर ने वो यहाँ पे दिया है कि अगर माइंड का डिफेंस है और इंफ्लामेटरी सोरिक डिफेंस है तो एंजाइटी बढ़ेगी, सेंसिटिविटी बढ़ेगी। तो दिस इज द फर्स्ट डिफेंस। वही सेकंड डिफेंस सर बोलते हैं कि सेकंड डिफेंस में ग्रोथ होगा, और ग्रोथ किस टाइप से, तो ग्रोथ में 2 टाइप्स सर ने दिया है, एक्सेस एंड लेस। Excess psychosis and less psychosis. Excess psychosis, that means growth, accumulation is in excess quantity, in excess, and less, that is the hypo. You know, so excess that means hyper, and less that means hypo. So excess psychosis, that is hyper psychosis and hyper growth, and less means hypo, that is the atrophy, etc. So excess psychosis और excess growth में सर ने दिया है कि फिजिकल डिफेंस में किस टाइप से ग्रोथ होगी और वो भी एक्सेस। सो एक्सेस बॉडी का डिफेंस कैसा होता है, तो एक्सेस ग्रोथ, प्रोडक्शन एक्सेस, एक्यूमुलेशन एक्शन, मतलब बॉडी में जो भी होगा एवरीथिंग विल बी एक्सेस, is called the excess growth, that is the second defense psychosis. वही मेंटल लेवल पे, that is मेंटल लेवल पे अगर कुछ भी एक्सेस होने का है, एक्सेस होगा तो वो कैसे होगा, तो अगर आप थिंक भी कर रहे हैं तो थिंकिंग एक्सेस, टॉकिंग एक्सेस, है ना। सो बोस्टिंग, शो ऑफ, ब्रैगर्टनेस, हमें अगर कुछ दिखाना है, हम क्या है ना, ईगो एक्सेस, and ego always create boasting, show off, and braggartness. So this is the at the level of mental, that is the excess psychosis, excess growth. Then less psychosis or less growth. तो physical defense में क्या होगा, always atrophy, growth stunted, है ना, less than normal, then production less, है ना, किसी भी हार्मोन्स का सिक्रेशन लेस होगा, देन एक्यूमुलेशन लेस होगा, लाइक दिस। सो दिस इज लेस साइकोसिस एंड हाइपोसाइकोसिस, ये फिजिकल लेवल पे। देन मेंटल लेवल पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, टिमिडिटी, फियर एंड रिजर्वनेस। अभी पहले हमने टॉक एक्सेस देखा, नाउ टॉक लेस, दैट इज रिजर्व, है ना। करेजियस, बोल्डनेस, ये एक्सेस साइकोसिस में आएगा, लेस साइकोसिस में टिमिड, फियर जाएगा। कॉन्फिडेंस एक्सेस, दैट इज द पॉजिटिवनेस, बोस्टर, ब्रैगर्ट, वही अगर लेस साइकोसिस में जाना है तो कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ, टिमिडिटी, नेगेटिव थिंकिंग, पेसिमिस्टिक, लाइक दिस। सो दिस इज द लेस साइकोसिस. So in first defense is inflammation, second defense is growth, and third defense, that is the destruction. So destruction at physical level, at mental level. So physical level पे अगर डिस्ट्रक्शन होता है तो सेल्स, ट्यूमर्स, सेल्स, टिश्यू में डिस्ट्रक्शन होगा, ऑर्गन्स में डिस्ट्रक्शन होगा, और मेंटल लेवल पे अगर होना है तो फिर माइंड, दैट इज द anger, violent, you know, thoughts, violent, excitement, violent, emotions, violent, all things goes out of control. So इसमें mostly सर ने 2 types दिए, necrosis and apolysis. So necrosis always create gangrenes, ulcers. It is destruction of cells, destruction of tissues, and apolysis, that is the fast and slow. So fast में motor neuron disease, AIDS, this is the fast destructive process in body. Then slow destructive process, it will always give rise to autoimmune disorder.
जो धीरे धीरे मारते रहता बॉडी को, सेल्फ डिस्ट्रक्शन बट स्लो, इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE। तो हमेशा एपोलाइसिस में 2 टाइप से ध्यान में रखना, फास्ट एंड स्लो डिस्ट्रक्शन, स्लो डेथ ऑफ सेल्स। सो फास्ट में सर ने जैसे मोटर न्यूरॉन डिसीज, एड्स दिया है, एंड स्लो में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एंड कैंसर 2 टाइप्स दिए। सो कैंसर्स में एक हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर और दूसरा म्यूटेशन ऑफ जीन्स। सो P53 mutation. So P53 mutation, that is retinoblastoma, and hormone disease, that is the breast cancer, etc. So this is the destructive defense. So main 3 defense are inflammatory defense, growth defense, and third is destructive defense. So inflammation, it is psychosis, growth, inflammation, it is psora, psychosis is growth, and destruction, it is syphilis. तो ये डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ लिविंग बीइंग सर ने दिया है। तो इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं फास्ट। अगर फिजिकल लेवल पे, लिविंग बॉडी फिजिकल लेवल पे अगर डिफेंस मैकेनिज्म अकॉर्डिंग टू ऑर्गन्स देखना है, which disease will create, so inflammatory always gives rise to inflammatory disease like dermatitis, conjunctivitis, bronchitis, gastritis, pancreatitis, vaginitis, convulsions, febrile, colics, hypertensions, acute, but it is anxiety, hypertension. So these are the diseases or depends of body. Then psychosis में less and excess. So less psychosis, excess psychosis. Mostly the psychosis, that is the accumulative process or proliferative process. So accumulative है तो it is dynamic, and proliferative है तो adynamic. So excess psychosis, that is hyperglycemia, hypercholesteremia, hyperlipidemia, hypermelanosis, hyperpigmentation, stress, hypertension, glaucoma, cyst, stones, contractures, strictures, indurations of organs, etc. These are excess psychosis. So it is accumulative, that means dynamic diseases, and less psychosis, that is dilatation of heart, relaxation, hernias, ptosis, prolapses. These are less psychosis. And proliferative, that means adynamic, benign tumors, polyps, fibroids, psoriasis, scaly, then warts, atherosclerosis, hypertension. These are adynamic. So this is psychosis. Now syphilis. Syphilis में जैसे psychosis में excess और less दिया है, तो syphilis में slow and fast दिया है. So which diseases are slow diseases, which diseases are fast diseases? So slow diseases, that means rheumatoid arthritis, Hashimoto's thyroid, psoriatic cracks, Alzheimer's disease, Parkinsonism, multiple sclerosis, chronic leukemia, chronic renal failure, motor neuron disease, and gangrene lupus. These are slow progressing syphilitic disease. And fast progressing, the epilepsy, pneumonia, cardiac brain infarct, anaphylaxis, acute meningitis, acute renal failure, acute leukemia. So these are the
fast progressing cyclicity. So this is the defense mechanism of living being at the physical level. Yes. तो इस चार्ट में अगर किसी को कुछ समझा नहीं तो बताइए. Yes. सब म्यूट है. हेलो. यस सर बोलिए. प्रणाम सर. हाँ सर, सब लोग जान रहे हैं ना, इसलिए म्यूट है. जाग रहे. जी जी. मेरे लिए सर ये जो सर चार्ट है ना, मेरा फट गया है हाफ जो है. मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि इसका अंदर वाला आप भिजवा दीजिएगा, मैं उसको निकलवा लूंगा, जो है कॉपी कर लूंगा. और ये सर बोस्टिंग और ब्रैकेट्स तो एक ही होता है ना सर, कि अलग अलग रूप लिखा है? एक्चुअली उसके लिए रेमेडीज सेम है, लेकिन रूब्रिक वो अलग अलग. बोस्टिंग, ब्रैगट, मीनिंग एक ही होता है. जी. यस. सो नाउ वी विल स्टार्ट. जी सर. यस. अबाउट द पेज मैंने आपको बताया है, फिर भी मैं थोड़ा सा फास्टली आप इसको रीड करता हूं. अबाउट द कवर पेज. The cover page comprises of title Predictive Homeopathy Part 3. It elaborates the thoughts of the author. It has been designed by the author and executed by artist Prafulla Vijayakar. So, the name of the book is The End of Miasmations of Miasms, A Cell in the Background, A Clock of Human Age, The Miasmatic Stages of Man, The Chromosome. The subtitle Mathematics of Humans Defense Against Diseases. The colors. The name of the book, The End of Miasmations, is about miasms, which have been the most misunderstood and misconceived part of homeopathy study. The name has been coined out the combination of two words, miasm and assumption. The author wishes that the science in this book will put an end to all the assumptions and presumptions about the miasms, and hence the name Miasmations. Yes. So this is Miasmations is the combination of assumption and presumptions. तो इसके आगे कुछ भी नहीं है, ऐसा सर का कहना है. This is the end of all presumptions and assumptions. Yes. The explanations are based on the study of the units of life, the cell, and hence it forms the background. Man's life has been depicted in three important stages of the clock, which represents lifespan of man. The three important stages are based on defense mechanism of the man at the cellular level. There is a genetic control over all these defenses, and hence the depiction of chromosome in the background. Yes. So all information including genes. That's why sir takes on the this picture on the cover page. All this is genetically governed and mathematical if understood properly, and hence the subtitle Mathematics of Human Defense Against Disease is there. So colored scheme, the color used are red, yellow, green. The color of a signal, green stands for going on, yellow slowing down, and the red stop, which somehow is similar to psoriasis and syphilis. So this is the about the cover page. Now about the author. Author के बारे में आपको सभी को पता है, फिर भी अगर हम ये पढ़ते हैं तो थोड़े से
सर के लिए हमारे यादें ताजी हो जाएंगी, इसलिए मैं पढ़ना चाहूंगा। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, सेज डॉक्टर विजयकर, इज दैट आई हैव tried to bridge human related sciences with their recent advantages and homeopathic science. Dr. Vijayakar happens to be the first physician in the world to have gone into the depth of embryology and tapped the significance of Hering's law. This is a very big contribution that he has made to the field of homeopathy. A solid scientific base has been given to this magnificent science. This interpretation is put in the form of his chart of suppression. Yes, suppression की स्टडी हमने की है, सर ने कितना ब्रिजिंग किया है मॉडर्न साइंस एंड होम्योपैथी को with the examples. Yes, so he is the first homeopath to show his failures in seminars and point out how homeopathy can also cause very bad suppression when practiced in the wrong way. The chart beautifully illustrates how disease progresses gradually from one system to another and how the reversal takes place in cure. It serves as a clear-cut guide in practice. Yes, so these books are the main weapons of homeopathy. इसे कैसे यूज करना है, अगर कोई इसे रॉन्ग वे से लेते हैं तो ऑलवेज ही विल गो रॉन्ग। तो ये हमारे लिए सर ने बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन दिया है कि अगर आप इसे पढ़ते हैं तो you will get 100% perfect result, sure result. Yes. So it is said that the modern medicine has progressed. Homeopathy is based on principles which are as rock solid, but it is not understood by the people. In addition, to bring the first homeopath to show his failures in his seminar series, he is also one of the few homeopaths to invite questions. The fastest constitutional prescriber, a quick, good look at the patient, yes, his body structure, body language, and his diagnosis of the patient remedies ready as soon as the patient enters and starts talking. He is also the largest crowd puller to seminar in India today. Yes. ये सब पढ़ के वो सब यादें ताजी हो रही है जो हमने इतने सेमिनार सर के किए, वर्कशॉप्स किए, सर के कितनी बार ओपीडी अटेंड किए. So he stands a record of 150 people attending his 3-day seminar in Punjab. 150 नहीं, उससे भी कहीं गुना ज्यादा डेलीगेट्स हमने देखे सर के सेमिनार में. सर का जब विज्ञान भवन में सेमिनार हुआ था दिल्ली में, नियर अबाउट 2000 क्राउड वहां पे था. यस, firm and sound knowledge of homeopathy and human related sciences, and inquiring and questioning mind, keep keen observations, ability to synthesize the information gathered faster than any computer. Yes, a brave heart, die hard confidence in himself and in homeopathic system of medicine, and above all the passion to see beyond the ordinary and then to pursue and find an explanation and answer. This is what has led Dr. Vijayakar to an extraordinary success. Yes, यही सब क्वालिटीज थी सर को इतना फेमस, इतना रिजल्ट ओरिएंटेड होम्योपैथ बनाने. So homeopaths around the world and homeopathy itself has a lot to gain from this. Please mute कीजिए. Charismatic man, yes.
it is not without any reason that he has been nicknamed the lion of homeopathy, yes, or the Einstein of homeopathy. He always says, let's grow together and let's us march towards unity in homeopathy. Sir ने always यही कहा है कि unity करो, होम्योपैथ्स की यूनिटी होनी चाहिए, है ना, और हमेशा जो आपके पास है उसे बांटते रहो, बांटने से कम नहीं होती सर। इसीलिए सर के पास कभी भी गए, सर को कभी भी फोन लगाया, कभी भी सर से कुछ भी पूछा तो एनी टाइम सर देने के लिए तैयार रहते, कुछ भी सर के पास उसका सॉल्यूशन होता है। सो दिस इज द ग्रेट पर्सनैलिटी। Now acknowledgement. An endeavor of this magnitude is the result of contribution and from several quarters. My special thanks to Dr. Prafulla Vijayakar, Dr. Praveen Jain, Dr. Bhakti Radia, Dr. Gunjan. So sir ने यहाँ पे सर के जितने भी असिस्टेंट सक्सेसफुल असिस्टेंट्स हो गए उनके नाम यहाँ सर ने दिया है, जिनके लिए सर ने एक्नॉलेजमेंट दिया है। Then I thank the faculty members of predictive homeopathy. देखो सर इतने ग्रेट थे ना, सर ने हर किसी के लिए यहाँ पे ग्रेटिट्यूड दिया है। सर का ग्रेटफुलनेस कितना सुप्रीम है, देखो कि हर किसी के लिए सर थैंकफुल है, ग्रेटफुल है, यस। और ऑलवेज ये सृष्टि का नियम ही है कि अगर आप ग्रेटफुल होते हैं ना तो आपको वो हर चीज मिलेगी जिसको आप डिजर्व करते हैं। इसलिए हमेशा ऑलवेज अपने लाइफ में ग्रेटफुल होना ही चाहिए, यस। देन द प्रीफेस। The name of this book has been coined as end of assumption, end of my assumptions of miasm. There is no such word as my assumptions, but it is a word, yes. ऐसा कोई वर्ड डिक्शनरी में नहीं है। दिस इज द सर, ये सर मतलब ये सर का ही अजम्पशन से सर ने ये वर्ड ढूंढ के निकाला, सर ने खुद इसे बनाया, माय अजम्पशंस, दो वर्ड को मिला के सर ने वर्ड बनाया। सो दिस इज द इन्वेंशन ऑफ डॉक्टर विजयकर सर, बट इट इज अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम अ combination of miasm and assumption. The first two letters literally means mind. In short, the theory which I herewith propose in this book has been based on firm scientific facts. The study of modern advances made in pathology and embryology has helped to decode the actual meaning of what Hahnemann could have meant by miasm. The application of this knowledge has helped me to unravel the mysteries of miasm and thereby helped me to get fantastic result in incurable terminal cases or cases with grave pathology. और ये क्यों पॉसिबल हुआ? Only because of miasm, the knowledge of miasm, the understanding of miasm. Yes. This knowledge has undoubtedly helped me to do away with all the assumptions which I had about this subject. They say when you assume things, you make an ass out of you and me. This has been happening in homeopathic world for a long time and is perhaps the reason why homeopaths do not have credibility amongst other therapeutic sciences. This is also the reason why homeopaths do not get consistent result. और इसका डॉक्टर हैनेमन ने भी कहा है थ्योरी ऑफ क्रॉनिक बुक में, why consistent result? उस पीरियड में भी डॉक्टर्स नहीं दे रहे थे और जब हैनेमन थे, और इस पीरियड में भी नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ माइजम। इसलिए डॉक्टर हैनेमन ने उस ओनली माइजम के लिए बुक निकाले, इतने बड़े बुक लिखे, दैट इज द थ्योरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। सो whoever had good knowledge and
command over the subject of miasm. Never tried to relate it to the modern science, and if they ever did it, they never tried to propagate it or share it with others. Yes. अब देखो, बहुत से लोग, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि जिनको पता होता है, जिनको नॉलेज होता है, लेकिन शेयर नहीं करते, किसी को बताते नहीं, अपने तक ही सीमित रखते हैं और उनके साथ ही वो सीमित होके चले जाता है। इसी वजह से होम्योपैथी पीछे। लेकिन इसी दुनिया में डॉक्टर विजयकर सर आए और सबको नॉलेजेबल बना दिया। So because of this, many people have tried to distort the meaning of this sacred word miasm, converting it into a fantasy and with ulterior motives. Dr. Hahnemann, in the preface of first edition of Chronic Disease, has said, if I did not know for what purpose I was put here on earth, to become better myself as far as possible and to make better everything around me. देखो कितना ग्रेट थिंकिंग था डॉक्टर हैनीमन का. Everything around me that is within my power to improve. Yes. So I should have to consider myself as lacking very much in worldly prudence to make known for good of the people. An art which I alone possess and which is within my power to make as profitable as possible by simply keeping it to a secret. To keep an art which he only possesses as a secret to take the profit and become successful alone, he thought was not worldly prudence. Yes. अगर आपको नॉलेज मिलता है और आप अपने ही पास रखते हैं तो वो आपके ही साथ चले जाएगा, उससे किसी भी अदर पर्सन्स को बेनिफिट होने वाला नहीं, ओनली आपका ही बेनिफिट होगा. और इतना अच्छा साइंस अगर नेचर ने हमें दिया है, नेचर में ये था लेकिन उसे ढूंढा डॉक्टर हैनीमन ने. और डॉक्टर हैनीमन ने ढूंढने के बाद भी हैनीमन ने बहुत कोशिश की लोगों में बांटने के लिए, लोगों को देने के लिए, लेकिन उसे राइट वे से कोई समझ नहीं पाए और वही काम किया जो अधूरा काम था डॉक्टर हैनीमन का, डॉक्टर विजयकर सर ने कंप्लीट किया कि हर उस पर्सन तक ये जाने को ना जो होम्योपैथी को लाइक करता है, बिलीव करता है. और इसीलिए सर ने हर किसी को नॉलेजेबल बनाने की कोशिश की थ्रू दिस नॉलेज, थ्रू हिज अंडरस्टैंडिंग अबाउट होम्योपैथी. The human mind feels within in the irresistible, harmless and praiseworthy impulse to give some account to itself as to the mode in which man accomplishes good by his actions. Dr. Hahnemann has written these lines of explanation not to satisfy any critics, but in order to present to homeopaths another and more probable attempt towards an explanation by the above statement of Dr. Hahnemann will the. So every attempt is to be made to give account of the mode in which human being functions. Yes, if one does get the knowledge of the application of any branch of science to homeopathy, it is not prudent to keep it secret. Yes. ना अच्छा सर ने इंट्रोडक्शन में लिखा है, आप भी ये नॉलेज ले रहे हैं, आपके पास भी होम्योपैथी के लिए बहुत अच्छा नॉलेज है, तो उसे अपने तक सीमित मत रखो, उसे बांटो, बांटने से और बढ़ेगा. मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा मेरे पास डिस्कशन के लिए आता है.
वो बोलता है यार मैं ये पढ़ता था, मुझे ये सब मालूम है, लेकिन वो ग्रोथ तब हो रहा है जब मैं तेरे से डिस्कशन करता हूँ। मैं जब हम डिस्कशन करते तो कितने सारे आइडियाज उसमें से ओपन अप होते, कितने सारे ओपनिंग्स हमें उसमें से मिलते हैं जब हम इसको डिस्कशन करते हैं। मतलब बांटने से ऑलवेज वो डबल ही होगा, ट्रिपल ही होगा, कम नहीं होगा। और जो ऐसी मेंटालिटी रखता है कि मुझे पता है दूसरों को नहीं पता चलने को ना, तो कुछ दिन बाद वो भी पूरा वैनिश हो जाता है, क्योंकि उसे ग्रो होने के लिए चांस ही नहीं मिल रहा, वो वहीं तक लिमिटेड रहेगा, वो उसमें नया कुछ आएगा नहीं, नया कुछ डेवलप होगा नहीं। इसलिए बांटते रहो, जो भी आपके पास है जितना भी है, थोड़ा सा भी क्यों ना हो उसे बांटो। हो सकता है सामने वाले को पता नहीं तो आपको और एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, तो और एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा। तो आप वैसे नहीं पढ़ेंगे तो कम से कम इस तरह से, इस वे से कभी पढ़ेंगे। इसलिए ऑलवेज कोशिश करते रहो बांटने की, दूसरों को देने की, दूसरों से डिस्कस करने की। आपके पास जो भी है उस पर डिस्कस करो। So if one does gets the knowledge of the application of any branch of science of homeopathy, it is not prudent to keep it secret, and it should be shared with fellow homeopaths. Yes. Both these above virtues contribute to make everything better around us, and that is within our power to improve. Yes. Very nice thought. With these three objects in mind, I proceed to put forth an explanation to the ever debatable, ever confusing, a touch of philosophy, which induces logical thinking, may give it a line of deductive hypothesis. It is timely to recall that 50 years ago, Frederick Goland Hopkins, a famous human biochemist, stated, क्या कहा है हॉपकिंस ने, क्या कहा है? The task of the human biochemist or scientist wishing to get to the heart of the problem is exceptional. He must study the system in which organization of chemical events counts for more and is carried far beyond that of non-living system due to high organization. Such high organizations cannot depend upon mere presence of concentrations and structural distribution among specialized colloidal catalysts. But he says, I think, in feeling sure, such factors contribute to that organizations make a significant sense. This is the thinking of Hopkins, Dr. Hopkins. Thus, the human biochemist, in describing the living system, comes in contact with philosophical thought. He further adds, current philosophy is busy in emphasizing the truism that the properties of the whole do not merely summarize but emerge from the properties of its parts. That chemical data can throw some real light on the nature of the organism, which in its very essence is a unit. The biologist has long studied living organism as a whole with ever increasing interest, but these studies can tell us nothing of the nature of the physical basis of life, which no form of philosophy can ignore. He further states, it is necessary for the biologist and biochemist, whoever is interested in the working and existence of human being, even if it be a homeopath, that the data collected by them by means of science be related with the activities of the organism as a whole. So ये 300 years
बैक में डॉक्टर हैनीमन ने कहा वही लोग अभी इसे प्रूव कर रहे हैं. सो डॉक्टर हैनीमन एक्सप्रेस द लिमिटेशंस ऑफ द साइंस प्रिवेलिंग ड्यूरिंग हिज टाइम. यस, तो डॉक्टर हैनीमन को भी उनके लिमिटेशन समझ में आ रहे थे कि हम मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन चेंज कर रहे हैं, बार बार इतने सारे मेडिसिन प्रूव किए फिर भी क्योर क्यों नहीं हो रहा. देन ही राइट्स ऑन द थ्योरी ऑफ माइasm. He meant the theory of miasm. Yes. So at the same time, he warned us by his foresight that whatever changes we observe in the living organic subjects, human beings being only one of the many, and whatever changes we see in them in terms of symptoms expressed by disorders, organs, and systems cannot by any means lead us to explanations of what is wrong within them. This is categorically stated because he was sure that whatever has happening at cellular and tissue molecular level, that is deep within the depth of the man, is certainly a different process. And this he could not explain because during his time science had not advanced enough, nor were electronic microscope discovered to unravel the mysteries. फिर भी उन्होंने कितना सारा on the basis of his mind, his logical thinking, इस बेस पे उन्होंने कितना सारा elaborate करके लिख के रखा है. Yes, this way why he rightly criticized the allopathic approach of treating the disordered system or organs, neglecting the tissues and cells which form them. And what a pity that this science is still at the same superficial level. इतना deep logically लिखने के बाद भी without any help of these advances, कि आज वो सब कुछ होने के बाद भी हम उतना डिटेल में नहीं जा सकते, इतना वास्ट थिंकिंग नहीं रख सकते, उतनी थिंकिंग डॉक्टर हैनीमन की थी. And what a pity that this science is still at the superficial level. This is shame to us कि हमारे पास इतना होने के बाद भी हम होम्योपैथी को वो राइट पोजीशन नहीं दे पाए of treating system or organs, even when science has advanced in leaps and bounds. Yes. So homeopathy have been treating cases of colds, coughs, skin diseases, and arthritis with easy. But their limitations have incidentally remained the same as their allopathic counterparts. Yes. ये तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ये तो कोई भी करेगा. लेकिन हैनीमन ने इन केसेस में रिजल्ट दो और कॉलर टाइट करो ऐसा नहीं कहा है. वो डिजीजेस ट्रीट करो जो टर्मिनल केसेस है. The cases diabetes, hypertension, cancer, AIDS do not respond to their treatment. इन diseases में हमें रिलीफ देना है. So then what was the great idea of proposing a new science which Hahnemann did if he limitations he were to remain the same? This means homeopaths have missed on to something important and not understood something which Hahnemann wanted to convey. This is lacuna in our understanding. जो हैनीमन को कहना था, जो हैनीमन को बनाना था, वो हम समझ ही नहीं पाते. So now the science has advanced by leaps and bounds. We can now understand the human being very deeply, even at cellular, genetic level, molecular level, protein level, which of course forms a part of whole. And holistic homeopath cannot afford to neglect such an important aspect of human being. This has been perhaps an obstruction to the progress of such a mathematical and universal science of homeopathy. Thus, with the above
dictates I am humbly trying to cooperate certain well-known principles of physics, chemistry, biology, genetics, immunology, human biochemistry, and embryology to try and simply the doctrine of miasms so that it may be helpful to the youngsters as it has undoubtedly helped me in curing the higher level grave diseases with pathological changes and bring homeopathy out of its malignant symptoms or mentals, relieving camouflage outfit. Yes, this knowledge has certainly helped me to end my assumptions of miasm, and I sincerely hope it does the same for you too. Yes, so this is the word of Dr. Vijayakar sir. So बहुत ही अच्छा सर ने यहाँ लिखा है हमारे फ्यूचर के लिए, होम्योपैथी के फ्यूचर के लिए ना बढ़िया सर लिख के गए और वैसा ही सर करके गए हमारे लिए। इतना अच्छा ग्रेट डिस्कवरी सर ने खुद पहले हम माइजन समझ के हमारे लिए लिख के रखा है, जो हैनिमन की थ्योरी को हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो सर ने कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग करके इस बुक को लिखा है, जो हमारा फ्यूचर का ब्राइटनेस शो करता है। यस, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन प्रीफेस फॉरवर्ड अबाउट दिस बुक। कल हम इसका चैप्टर फर्स्ट एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर स्टार्ट करेंगे। अब इस बुक पे अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है, कुछ सर के साथ कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा जो बहुत ही माइंड ब्लोइंग हो, वो शेयर कर सकते हैं। यस, सो थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ कहना है बिफोर आई quit this session? Yes, someone else. ओके, तो मैं ही पूछ लेता हूँ, ये बुक आज तक किसी ने कितनी बार पढ़ा, किसने पढ़ा, और किसने अभी तक भी पढ़ा नहीं, तो बुक को खोल के भी नहीं देखा, ऐसा कौन कौन है? हरिओम बोल रहा हूँ सर, हरिओम सिंह जी। हरिओम जी, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैंने नहीं पढ़ा था, मैं तो 2018 से खरीद के रखता हूँ सर। बुक है आपके पास, लेकिन 2018 में सर जब आए थे बनारस में, तो मैं गया था, सर का सिग्नेचर भी लिया था, और वो जो बुक कॉपी थी वो खो गई जो है लंच में, खाने गए तो कोई ले लिया लिखने के लिए, और सब बुक लिया था सर का, लेकिन इसको मैंने पढ़ा नहीं था। ओके, तो अभी हम इतने अच्छी तरह से पढ़ाएंगे कि आपको बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा ठीक है, धन्यवाद सर। यस यस, अभी किसी ने हैंड राइज किया था। सर मैं प्रशांत खाद्य। यस, खाद्य जी बोलिए। पढ़ी है और मुझे बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ती रहती। यस, अभी मैं सिफिलिटिक चैप्टर पढ़ ही रहा था, तो अच्छा, तो वोलेटाइल हो जाता है सर नॉलेज कई बार। यस तो यस, पढ़ते रहना पड़ता है। यस यस, तो पढ़ते रहना चाहिए। यस यस यस, हरिओम जी सर, बोलिए। एक पूछना था सर, विजयकर सर जो है वो टॉर्च इन्फेक्शन रहा तो पहले कैनाबिस सटाइवा देते थे, तो ऐसा क्यों? कुछ इसकी मेडिकल लॉजिक नहीं, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं आया ऐसा कुछ। ठीक है। यस, हरिओम जी, आप कुछ कहना चाहते हो, बोलिए। नहीं सर, सुन रहा हूँ मैं। और कीनली सुन रहे हैं आप। ओके, यस,
Yes, someone else. हेलो सर, गुड इवनिंग, बोलिए। सर एक एक्यूट का केस ठीक हुआ सर। पल्स फेस पैरालिसिस टाइप से हो रहा था। गर्ल्स पल्स। एक बच्ची है 17 साल की। जी सर, तो उसकी हिस्ट्री पहले बताना चाहेंगे। सर पूरा फेस इतना डल हो चुका था कि वो कुछ बोल रही थी तो लग नहीं रहा था कि ये बच्ची बोल रही है। और लेफ्ट साइड की उसकी आंख भी थोड़ा सा छोटी समझ में आई थी, चेहरा भी दबा हुआ था और चेहरे पे दर्द भी हो रहा था और हवा नहीं मुंह पे भर पा रही थी। मैंने कहा जरा हवा भरो, तो नहीं भर पा रही थी, निकल जा रही थी। और उसको मतलब मेंटल में ये समझ में आया, वो कह रही थी अकेले रहना अच्छा लग रहा है और कोई रहे भी तो बोले नहीं। और कुछ बोल रहे थे तो चिड़चिड़ बहुत कर रही थी, जैसे हम पूछ रहे थे बार बार सवाल तो गुस्सा भी हो रही थी। और हेडेक बढ़ रहा था उसको पढ़ाई करने से। और भूख भी नहीं लग रही थी और डिजायर पूछा तो थोड़ा सा बोल रही थी साल्टी और स्पाइसी टाइप से मन कर रहा है। और थर्स्ट में कभी कह रही थी थर्स्ट लग रही, कभी कह रही नहीं लग रही। और थर्मल में भी कभी कह रही थी गर्मी लग रही, कभी ठंडी, जबकि यहाँ पे ठंड काफी तेज है सर। अभी कल से कुछ ठीक है आज मौसम। तो सर इसको हमने डल वो किए थे मतलब एक्टिविटी में। और डल में जाके फिर चिली और हार्ट में, लेकिन मोर देन सर चिली लग रही थी तो चिली तरफ जाके। और थर्स्ट में भी इस तरह से समझ में आया कि मैंने कहा रोज बेटा कितना पानी पीती हो, तो बोल रही थी बॉटल खत्म हो जाती है जब स्कूल लेके जाती थी, लेकिन आज खत्म नहीं हुई है, थोड़ा ही पी पाई हूँ। तो सर थर्स्टलेस उस पे हमने ये किया। और अकेला अच्छा रहना अच्छा लग रहा था, तो और कोई बोले नहीं, बोले भी तो उसको गुस्सा आ रहा था। तो सर कॉन्ट्रडिक्शन मतलब इंटॉलरेबल समझ में आया कुछ ऐसा ही। तो ये सब को देखते हुए सर हमने नेट्रम कार्ड 30 दिए थे सर। तो उस दिन यानी सैटरडे की बात है सर, शाम की। हम उस समय वीडियो नहीं ले पाए, लेकिन संडे की सुबह हमने वीडियो लिए उसका। तो वो वीडियो भी सर हम शेयर करेंगे आपको। तो अभी कैसी है? अभी सर काफी मतलब लगभग काफी ठीक हो गई है। थोड़ा थोड़ा भी दर्द कर रहा फेस में, स्वेलिंग लगभग दोनों तरफ बराबर आ गई है। एक तरफ का चेहरा बिल्कुल है जो पका हुआ था वो भी नॉर्मल आया, काफी आ गया। गुड। ये सर सेकेंड डे का सुबह का वीडियो है। गुड 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 रिजल्ट। यस यस यस। डॉक्टर नरेश, आपने दिया क्या वो मेडिसिन पेशेंट को? सर दिया, लेकिन उन्होंने जल्दी नहीं दिया। 4:15 बजे पहला डोज दिया सर। ओके, टू अर्ली बोलिए अप्लाई करने के लिए। हाँ जी सर। कल मॉर्निंग तक कुछ ना कुछ हमें दिखेगा। जो उसका रेस्टलेसनेस है ना, काफी रेस्टलेस है पेशेंट, वो रेस्टलेसनेस थोड़ा कम हो जाएगा। देन आई ओपनिंग उनके चेहरे पे जो उन्होंने बांध के रखा है ना, बैंडेज लगा के रखा है, उसे थोड़ा सा हटा के देखिएगा आई ओपनिंग में कुछ है क्या। देन उनका बीपी और ब्लड शुगर में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। जैसे देने के पहले ऐसे बोल रहे थे कि थोड़ा सा एक्टिव है, जैसे ऑक्सीजन की लेवल है उसमें सुधार है करके, मेडिसिन देने के पहले ही। और हार्ट काम कर रहा है करके ऐसा बोल रहे थे। ओके। फिर भी 4:15 बजे अप्लाई किया तो उनको बताया मैंने, जो जो भी कुछ पॉजिटिव बातें हैं वो नोट करके रखिए। तो ब्लड शुगर लेवल भी कल चेक कर लेना वरना। हाँ सर। यस, देखते हैं कल मॉर्निंग तक क्या चेंजेस आते। ठीक है? यस सर। चलो ओके, कल मिलते हैं हम फिर। यस ओके सर। यस। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय, सी यू टुमारो।